Junior College. The topic for today's discussion is on types. Yesterday we only covered up the determinants of attentions. Today we have to focus on the types. What are the types of attentions? So just a flashback of the previous class, what we understood about the definitions of attentions. We understood that attention is a selective process, and what kind of process it is? It is a cognitive process which is selectively chosen. So the meaning of that attention we derived as the process through which certain stimuli are selected from a group of others is generally referred to as attentions. आमे जेतेबे क्लासरूम को पसुछु किंबा कोनोसी सोशल गैदरिंग रे पसुछु आमर गुडाई स्टिमुली एवरी स्टिमुली आर प्रेजेंटेड देयर बट वी फोकस ऑन टू और मोर स्टिमुली एट ए टाइम आमे दुई तीनटा जिनिस ही आम अटेंशन टा ड्रॉ करथाउ व्हाइल इग्नोरिंग द होल स्टिमुली आमे होल स्टिमुली को अटेंशन देउनु दुई तीनटा स्टिमुली को ही आमे अटेंशन देई थाउ सेति पई याकू सिलेक्टिवली चूजन बोली कहा जाय आमे इंटेंशनली एवं सिलेक्टिव भाबले सिलेक्ट करी कि आमे अटेंशन टा draw करithau. So the definitions are given, we understood, and this is the facts about the attention. We knew that attention is essentially a process, not a product. It is selective in nature. It helps us in being conscious of our environment. It is readiness to deal with stimuli and give a response. It is basically a cognitive process and is influenced by emotional and motivational factors. We knew that attention is about a conscious process. Unless we do not feel the requirement or do not feel the readiness within self, we cannot attend to. कहीं आमे गोटे बही पढ़िया को जाऊछु इट इज ए इंटेंशनल एक्ट मते बही पढ़िया को इच्छा हैला किंबा कोनोसी पोर्शन्स ता मते देखिया को इच्छा हैला तो मेंटल रेडीनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फैक्टर मते जदि जने इंपोज करूची कि हां जा पढ़िबु जा बही पाठ पाखरे बस बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट हैविंग द इंटरेस्ट विद इन मी और आई एम नॉट हैविंग द क्वेरी विद इन मी देन प्रोबेबिलिटी इज दैट प्रोबेबली आई विल प्रिटेंड टू रीड द बुक बट थिंग इज दैट आई एम नॉट रीडिंग द बुक से प्रकार हे पारिबो सेति पय तो मेंटल रेडीनेस आसीबा दरकार जो थरे कि तमे अटेंटिवली गोटे पर्टिकुलर पोर्शन्स और एरिया ऑफ द बुक यू कैन फोकस ऑन. Similarly, आ गोटे पॉइंट मु कहिथिली एथिरे कि इमोशनल एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स प्ले ए वेरी इंपोर्टेंट रोल काहे कि ना हमें वी आर ट्रिगर्ड बाय आवर इमोशनल फैक्टर्स एंड डायरेक्ट आवरसेल्फ टुवर्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट्स जेमति कि मने करो मु जे रास्ता क्रॉस करू okay, I'm very disturbed on that day. Probability is that somebody is giving a louder horn behind me किंतु मते सुना ही जाऊ नाही काहे ना my mind is engaged in something else जोटा कि मते my thought process is distracted to something else तो एई जगह रे मो attention horn even if it is very higher or louder I am not able to listen to the louder horn also. तो सेमती हो पारे एवं मोटिवेशन प्रोसेस आल्सो अफेक्ट करे अटेंशन को जेमती कि आमे मोटिवेशन वी आर मोटिवेटेड टू सर्टेन काइंड ऑफ अटेंटिव बिहेवियर माने हैला देखो तुमको जते बड़े भोक लागुची ना तमे यू विल गो टू हैव द फूड इमीडिएटली तुमको सेई जिनिस छडा अन्य जिनिस किछि देखा जीवनी बेले बेले एमती भी हेई थाए कि हमरो जेमती कि सपोज somebody is motivation here I कहूँ somebody's home number might be like this 400D. If you are very much hungry then this 400D will be seen as food because you are in tremendous need or tremendous you have the motivation of having the food तो तमरो scarcity of food making you to read this 400D quarter number as the food because you are in the need of the food सेति पई कहा जाउची कि motivational factors also affect our attention and various for this we
वेरियस डिटरमिनेंट्स आमे दुईटा भागरे कन्फाइन कले दुई प्रकार कन्फाइन कले जेमति कि एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स अछि एवं इंटरनल डिटरमिनेंट्स अछि जोटा कि हमर अटेंशन क्राइटेरिया टाकू अफेक्ट करि थाए. एक्सटर्नल इज generally the outward influences, and internal is something that is within, or the inner influences, or we can rather say it as the subjective experience or subjective positions to affect the attention. So here are some of the external determinants that affects attention. We already discussed, so I am not going into detail. These are the external nature, intensity, size, durations, change and novelty, contrast, variety, location, repetition, movement, color, rareness, systematic form and complexity. We have already discussed what are it, so I am not going into detail. And these are the internal determinants: habit, needs and motive, mindset of yours that becomes the dispositions within you, then the emotions, attitude, past experience, social influence, mood. So today the topic of discussion, as I already told, is on the types. So we have to focus on these types. There are various types of attentions are there. We will start with our first type, that is the selective attentions. So selective attention is concerned with selections of particular stimuli. It is concerned with selection. The major concern of this type of attention is on selection, where a limited number of stimuli are selected. So selection of what? Selection of limited stimuli. We already knew that our perceptual system has limited capacity to receive and process informations. So in that respect, selective attentions we are being selectively choose certain dimensions or certain stimuli to attend. Here from the environment, various stimuli will be there, present there, but from various stimuli we generally selectively choose one or two stimuli to observe or to attend. One important thing is that while we selectively choose certain dimensions, certain stimuli at a time, here at the same time tuning other things, we are making tuning other things as out. किछिटा जिनिसटा को आमे आउट करूछु एवं जो जिनिसटा attentively selectively choose करछु ताकू ही हमें फोकस करछु किबा attention दउछु. For example, while you are reading a book, okay, while you are reading a book, you are ignoring the voices coming from outside, okay, outside of the room. हे पारे किबा बाहरे तम घर आगरे जे जदी पार्किंग करिछि ता हॉर्न, जो हॉर्न सब बाजुछि, गाड़ी जीवा आसा करछि तांको हॉर्न आसुछि, से गुडा को हमें जस्ट सिंपली वी जस्ट कीपिंग इट आउट बिकॉज योर होल अटेंशंस यू हैव drawn to yourself is selectively chosen because you have to read the book. So जो external factors गुडा को होछि से गुडा को हमें selectively हमें आउट कर दे थाओ, बाछी के हमें आउट कर थाओ because your whole focus is on attending to the book. Similarly, another example can be span of attentions. Span of attention माने होची how many items can be attended in a single glance. Okay, span of attention meaning होची how many information can be
attended at a given glance. that is the reason माने आमर गोटे moderate duration of time रहे कौन सी जिनिसटा को attend करिया पाई एवं from various researches it is found that आमे एका समय रे एतिके जिनिस ही attend करि परिबा 7 plus minus 2 as I told in my earlier class माने तमरो 9 digits सही पारे किंबा 5 letters सही पारे आमे एतिके रु अधिका देखि परिबा नाही letters or digits can be attended 7 plus 2 9 हे गला और माइनस कले 5 एतिकी रु अधिका हमर आमे अटेंड करिवार कैपेसिटी आम पाखरे न थाए सेति पई तमे बे जानि पारलो कि हमर मोटरसाइकिल किंबा मोटर बाइक हैला किंबा व्हीकल्स हैला फोर व्हीलर्स हैला सेथिरे नंबर प्लेट्स हमर जो रहउची सेथिरे किछिटा डिजिट्स रही थाए चारटा एवं ता सहित किछिटा इंग्लिश लेटर थाए जोटा कि इजियर टू अटेंड सो दैट केतले जण जदी वायोलेशन ऑफ द रूल करूथिबो ना गाड़ी वायोलेशन ऑफ द रूल करूथिबो तो somebody will be very attentive at the time on the road से भलो भाबर तार नेम प्लेट ता देखि पारिबो कहि पारिबो कि व्हाट इज द नंबर्स भाबी नियो कि नंबर्स ता जदी बहुत बिगर थांता मे बी 15 टा लेटर थांता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर एट अ सिंगल ग्लांस हला काइना एक्सीडेंट ता मु करूची कहि कि तो जणे आसीबनी ना एक्सीडेंट ता जणे करूची कहि कि रोड ऊपर को आसीबनी आमे with a fraction of a time गोटे एक्सीडेंट टा गोटे एमती जिनिस सेटा ऑल ऑफ ए सडन है थाए तो सडन हैला बेल को केतेटा माइंड सेट माने परसेप्चुअल एबिलिटी जण रखिछि माने केतेटा परसेप्चुअल एबिलिटी जण पर्सन्स रो रहउछि एतिकी ही 7 प्लस माइनस 2 याठो अधिका हेले से रखि पारिबो नाही तो सेति पई नंबर प्लेट सोडा को जोटा इजियर टू रिमेंबर थाए सो दैट समथिंग समझ के जदि वायोलेशन ऑफ राइडिंग करूछि ताहले जणे देखि पारिबो इजीली ताकू नोट करि पारिबो एवं इमिडिएटली ताकू इन्फॉर्म करि पारिबो टू पुलिस को इन्फॉर्म करि पारिबो किंबा इन्फॉर्मेशन जते बेले पुलिस माने नीड करूथबे ताकू जणै पारिबो सेही भळे नंबर प्लेट्स ता कराई थाए because we can easily read and note these numbers of violation of driving rules आमे करि जेतडे के जो violation of driving rules करूथबा आमे easily read and note the note सेति पई ही ए जिनिसटा करा जाइछि next come to the sustained attentions second point is about the sustained attentions this is the second type of attentions as the name indicating आमे जानिले while selective attention is concerned with selection sustained attention is concerned with concentrations sustained attention is concerned with concentration तो यार मीनिंग कौन होची इट इज द एबिलिटी इट रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशंस इट मीन्स सस्टेन अटेंशन मीन्स इट इज आवर एबिलिटी it is not an easy task okay because continuity of concentration must be maintained all through the time still the your objective is not fulfilled these things should be done on your part got it so it is also known as vigilance the another name of this sustained attention is known as vigilance it is known as vigilance means it requires continuous concentrations without distracting at a particular time
till your objective or your goal has not met to you. Here people have to concentrate on particular task for many hours. Examples can be cited here as soldiers at the borders or traffic men or controller during doing their duties. Radar reader means जो aircraft officers माने रोचंती तांकर टास्क होची कंसंट्रेटली कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट करथिबे कि हाँ एयरक्राफ्ट जेतेले जाउची कोनोसी विमान युद्ध पय जाउची कि कोनोसी कार्य पय जाउची से माने कंसंट्रेटली concentrate करथिबे particularly without distraction of anything. They have to put their 100% concentration or attention on a particular objective. Another thing about sustained attention is that research findings saying that sustained attention peaks during the early 40s, then gradually declines as per the age. Early 40s jaye sustained attention is quite means your people has the capacity to give the sustained attentions. After 40s their sustained attentions is generally not found amongst the people because aging will develop afterwards, and where sustained attentions actually declines within the self. Next point is about voluntary attentions. Voluntary attentions. This is about we attend to task in order to accomplish a clear cut goal. Voluntary attention means meaning कौन है voluntary attention we attend to tasks to accomplish a clear cut goal. आमर गोटे गोल सेट करि थाउ आम माने एवं सेही डायरेक्शंस रे आमे जते बेले से गोल डायरेक्शंस को फुलफिल करिया को जाउछु ताकू आमे कहउछु voluntary attentions. Actually voluntary attentions are of two type each of two types, implicit and explicit. Okay, implicit and explicit. It is of two types. गोटे हैला implicit आ गोटे हैला explicit. Implicit attention हैला it is aroused by single act or of will. एटा केमिति आमर arouse होची within the self, it is aroused by single act or will. Suppose example है क्या परिबो कि suppose a teacher wants a student to complete a home task. से जगह रे कोन करिवो ना और से जगह रे कोन करिवो टीचर स्टूडेंट को कहबो कि तू ए जिनिसटा कंप्लीट कर, ए जिनिसटा कंप्लीट करी कि आनिबु न हले you will be punished for it. तो से जगह रे गोटे सिंगल डायमेंशन सिंगल एक्ट रे ही से कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क कंप्लीट हो गला कहीं टीचर थरे कहले ताकू बार बार कहया पड़िनी थरे जते बेले कहि दैछंती बारंबार कहया दरकार ही पड़ी नहीं कहले कि अरे मु तते होम टास्क दउची एटा तू काली किबा 2 दिन परे निश्चित करी के आनिबु जदी न करी के आनिछु ताहले यू विल बी पनिश्ड वन सिंगल वार्निंग सेइथरे ही तार कामटा हे गला सेता को कहा जाउची इम्प्लिसिट अटेंशंस.
Explicit attention is aroused by repeated acts of will, but it is just the opposite. Explicit hochi, it is aroused by repeated acts of wills. Here the person struggles hard to keep his attention focused on certain tasks to accomplish his goals. एग्जाम आसी गलानी ताकू केमती तार गोल डायरेक्शन को पहुँचब ताकू बहुत स्ट्रगल करिया पड़िबो तार डिस्ट्रैक्शन एरिया को कमेया को पड़िबो ता पाठ क्वालिटी ता स्ट्रेटजी डेवलप करियार भाबिबो से केमती से कले अधिका मार्क गेन करि परिबो अल्प समय रे एवं केमती से नोट प्रिपेयर करिबो गुडा जिनिस थाए तो इट इज exhaustive as well as the person will struggle say hard to reach to his goal directions. एठी थरे करे से जिनिसटा हेई नाही एठी बारंबार टीचर हो पेरेंट्स हो किबा एल्डरली हो ताकू बारंबार से जिनिसटा पाठ प्रति ताकू एंगेज करिया पे बारंबार प्रथम रु कही आसुछंती एट द मिडल और द एंड बिफोर द एग्जाम द पर्सन इज नाउ thinking that he should develop the self studies within self so that he will crack the exam तार एग्जाम टा भलो हबो से दिगरे से चेष्टा करिबा आरंभ करिथाय. नेक्स्ट होची तमरो involuntary एटा गला voluntary attentions. Another attention is that is called as the involuntary attentions. Involuntary attention hochi attention occurs without conscious effort of our part. आमे consciously तापाई चेष्टा करि न थाउ. It is something like automatic. It can be enforced and spontaneous. आमे एई attention रे तमे चेष्टा करिया को पड़ी न था involuntary थाए सेथि पई याकू involuntary बोली कहा जाउछि. देखिलो तो एटा कोन होची आमे कॉन्शियसली किंबा इंटेंशनली वी आर नॉट डायरेक्टेड योरसेल्फ टू अटेंड माने एटा ऑटोमेटिक थाए ऑटोमेटिकली इट विल कम टू विद इन सेल्फ. तो एई प्रकार इनवॉल्यूंटरी अटेंशन को आमर दुई भाग रे विभक्त करा जायछि सेगुडा कहला एनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस. इनवॉल्यूंटरी अटेंशन आर ऑफ टू टाइप्स, एनफोर्स्ड and spontaneous. Enforced attention is that which is aroused by our instincts and curiosity. It is aroused by and spontaneous is aroused by sentiments. It is spontaneous attention is aroused by sentiments. जेमती कि फर्स्ट हैला कि एनफोर्स्ड अटेंशन आमे कोन कहले इट इज अराउज्ड बाय इंस्टिंक्ट्स और क्यूरियोसिटी. आमर किछिटा इंस्टिंक्ट्स बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स किबा साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स आर देयर विद इन सेल्फ. सोशल इंस्टिंक्ट्स आर देयर फॉर व्हिच वी आर फोकसिंग अटेंशंस. बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स आर आमर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस नीड करे जेमती कि आमे कहि परिबा कि हंगर हे पारे किबा सेक्स हे पारे
किंबा हंगर किंबा थर्स्ट हो पारे दैट इज द बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स दैट रिक्वायर्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तापाई प्रॉपर्ली इमीडिएट अटेंशन तुमको देबा पड़ो भोक लगिला यू आर रीडिंग समथिंग और यू आर वर्किंग है तुमको आफ्टर ए टाइम गैप तुमको निश्चित भाव में भोक लगे कहीं भोक लगिला भोक जदि आम कंप्लीट न करूँ यू विल नॉट बी री एनर्जाइज टू वर्क है तुमको एनर्जी प्रोवाइडर फूडटा काम करुच्ची से तुमको खाया को दरकार पड़ो लंच आवर ब्रेक प्रत्येक ऑक्युपेशंस रे बिजनेस हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो कि तुम टीचिंग लाइन हो कि स्टूडेंट लाइफ हो आमर 1 to 2 कि बैंक हो 1:30 to 2:30 लंच आवर थाए कहीं तापर भी कम करने को पड़ी थाए तमें तो यू विल फूड विल प्रोवाइड यू एनर्जी टू वर्क मोटिवेट यू टू वर्क अगेन जदि भोकिला रही काम कर भूल भाल हेब योर अटेंशन विल बी डिस्ट्रैक्टेड तुम अटेंशन ही नथिबो एंड इवन इफ यू विल बी एबल टू वर्क इट विल नॉट बी द परफेक्टली डन माने तुम गोड़ाए प्रोजेक्ट रे भूल थिबो किंबा तमे अटेंशन ही दे पारिबो नाही भल भाबरे तो जहा किछि भी बड़का काम अछि सेथिरे दे पारिबो नाही तो सेटा होछि एनफोर्स्ड इंस्टिंक्ट जंती कि आमर जमती कि क्यूरोसिटी भी रोची जमती कि गोटे कहली क्यूरोसिटी इंस्टिंक्ट्स कहली खाली बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट द्वारा ही आम ट्रिगर है न था किछिटा आमर सोशल इंस्टिंक्ट्स भी रोची जमती कि विल ऑल नीड लव अफेक्शंस फॉर द सिक्योरिटी पर से आम फैमिली बिलोंग करुचु किंबा फैमिली नीड करुचु तो आम जिते से गुड़ा को बिलोंग करुचु वी आर also giving our attentions to the rituals social gatherings to the festive occasions तांकर सबू functions family functions get together I priority दोचु because we are attended to because that is our instincts that is our dispositions that is our social motive within selves okay तो आमे biologically हो किंबा socially हो किंबा psychologically also कहीं sometimes our mood also affect our attention I already told कहीं आमे जते बड़े भलो mood रे थाउ mood रे थिले आम positively deal करू situation सहित similarly your emotions play a vital role जो थिरे कि तमे जदि तुमको गोटे लोकटा भल लगुच यू आर अटैच टू दैट पर्सन्स तारी एडवाइस किंबा तारी कौन सी एडवाइस को एक्सेप्ट करि थाओ व्हेयरएज तमे जते जण को भल पाउ ना फैमिली मेंबर्स भीतर भी हो मन कर से लोकटा को तुम यू डू नॉट लाइक योर लाइकनेस इज नॉट अटैच टू द पर्सन्स तो सेई सेमतिया जगह रे सेमतिया लोक पाखरु जते बेले कौन सी एडवाइस टा आसी थाए तमे जनरली सिंपली इग्नोर दैट एडवाइस और यू आर सेइंग दैट ऑन द फ्रंट दैट आई डू नॉट सीक योर एडवाइस सो प्लीज डोंट गिव द एडवाइस ओके देन क्यूरियोसिटी है तुम जदि पर्सनल क्यूरियोसिटी कौन सी जिनसर थी जोटा कह जाए कि क्यूरियस हाउ पीपुल आर क्यूरियस जो जिनसटा अधा ही था से जिनसर क्यूरियोसिटी अधिका था इजंट इट छोट बेलू ही क्यूरियोसिटीटा मनीष पाखे रही आज ए लर्न कनसेप्ट जमती कि देख छोट पिला के ऑब्जर्व कर जो तुम जदि कही कि ड्रटा खोलबो ना कि कौन सी ताला पड़ी जिनिस गोटे थी घरे आमको से बापा माँ कही ताला कहीं पकईकी अच्छा बाकी तो कौन सी जिनिस ताला पकई ना यहीटा कहीं खाली ताला पड़ी कहीकि आम क्यूरियोसिटी आहरी डेभलप है भितर कौन अच्छी देखापी तो जो जिनसटा हाफ होगी थाए फुल हो गले तो समस्त जानी जाइछु सेटा कौन बट जो जिन हाफ होगी थाए कि अजଣା थाए दैट इज नॉट नोन टू यू तो से जगह क्यूरियोसिटी विल बी हायर इजंट इट तुम इन दैट सेंस वी कैन से दैट तुम बाहुबली मैंने समस्त देखिछ मूवी बाहुबली मूवी रे कौन होता पार्ट 1 देखिल then we all became curious about what would be kahin ki se marila so curiosity was quite higher within self I mean of everyone maybe movie amo family भी क्यूरियोसिटी डेभलप कला फॉर दैट हमें गोटे वर्ष कि 1.5 वर्ष अपेक्षा कले सेकेंड पार्टा देखापी है तो क्यूरियोसिटी डेभलप्स जो जिनसटा अधा ही थाए से जिनसटा अजଣା थाए जानी न था से जगह आम क्यूरियोसिटी विल बी क्वाइट हायर सिंपल कथा आम कौन सी जगह पेरेंट्स बुलेवाई नौ वेकेशन हो कि कौन सी जगार तो से जो जगह को आमको देखी न था जानी न था कि फूड आम खाई न था तो क्यूरियोसिटी विल बी क्वाइट हायर कि आम जिनसटा आम जानिनु कि जिनसटा आम देखिनु कि प्लेसटा को आम इन्वेंट करूँ लेट अस गो जिनिस पत्र किणाकिणी हो कि नुआ ड्रेस किणाकिणी हो क्यूरियोसिटी इज क्वाइट हायर कहीं आम देख तुम जो ड्रेस कि लुगापटा करुच एका प्रकार कि एका कलर आम किणुनु बिकज आम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कि डिफरेंट कलर्स किणुचु कि भेराइटी किणुचु कहीं यू आर क्यूरियस टू ब्रिंग दैट थिंग्स टू होम फॉर द सेल्फ ऑल्सो
जमती जहार बही पढ़िबारे इंटरेस्ट थिबो क्यूरियोसिटी विल बी क्वाइट हायर बही पढ़िबो आमे जदि गोटे नोवेलटे भी पढ़ुछु ना बिगिनिंग पढ़ीछु हमको एंड जाए पढ़िया को बहुत इच्छा बही पढ़ा जार क्यूरियोसिटी थिबो कहीं एंडटा न जानले बहीटा कंप्लीट लागिबो नाही कि व्हाट इज बुक अबाउट हमको आरंभ जेतेले करछु शेषटा भी जानिबा निहाती दरकार तो से जगह एनफोर्स्ड अटेंशन इज लाइक दैट स्पॉन्टेनियस अटेंशन इज अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स इट इज अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स जमते कि we attend to objects or idea to which we are connected आमर एटा सेंटिमेंट इमोशनल सेंटिमेंट सहित अटैच थाए देखिबो मु जते बेले कोन कहबी आमे इमोशनली सेंटिमेंट्स टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो जेमति कि इफ यू आर इमोशनली ट्रिगर ओके तम बापा माँ भाई भौणी समस्त सांगे अच्छ तमर गोटे पर्टिकुलर स्टेज आसे गोटे दिन है when you will be grown up when your parents will not be there तो तमरो तमे इमोशनल तो sentiments will be quite higher तमे objects you will try to find out that love and affection from the objects that belongs to sentiments कहया माने हेले एटा मो बापा किबा मो माँ देइथिले this साड़ी gift is gifted by my mother or my father तो मोर एटा इमोशनल सेंटिमेंट रहबा मो ए साड़ीटा अन्य काहा को देबा को मते भलो लागिबोनी किबा मते न पचार कि जदी ए साड़ीटा आउ के पिंदी देछि I feel so bad काहे ना emotionally or the sentiments is attached to it because this is the last sari that I got it from my mother or my father thus emotional sentiments set खाली साड़ी कोन ऑब्जेक्ट्स सहित भी कप हो किंबा फर्नीचर्स हो किंबा बेड हो किंबा सिंपली गोटे पेंटे भी हो तो वी आर इमोशनल सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू इट समटाइम्स बेस्ट फ्रेंड देई थाई पारे भाई भौणी भीतर भल सांग देई पारि थाए हस्बैंड देई पारि थांती वाइफ देई पारि थाए किंबा तमर one of your good childhood friend might have given it तो emotional sentiments से attached ହେଇକି ରହିଥାଏ similarly we are connected to connected sentimentally जो थरे कि आमे कोन करछु ना we prefer to attend marriages relatives gathering कहीं ना आमर sentiments attached अछि अरे we belong to the same family even if आमर conflict अछि कि जहा किछि अछि आमर sentiments अछि common sentiments अछि from the childhood I know him biologically I know him from generation to generation I used to see my father was doing it so I should also maintain that relationship sentiments jogu hi sei jo ame sei guda ko avoid kari parunu we have to maintain it and we assure that everybody in the family must maintain that relationship all these things are done because of the sentiments so this is known as the spontaneous attentions. Next one is habitual attention. Habitual attentions, it occurs as a habit. Habitual attention, it occurs as a habit. किछिटा जिनिस कौन सी एक्टिविटीज करू करू इट बिकम्स समटाइम्स योर हैबिट ओके तो आमर सेटा जते हैबिट हो जाए आमे से जिनिसटा केबे अवॉइड करि पारू ना से इट इज विद इन यू इट इज योर डिस्पोजिशंस राइट टू यू सपोज तुम गोटे हेल्पिंग बिहेवियर इज योर डिस्पोजिशंस तुम अन्य को हेल्प करबा किंबा सहाय्य करबा को तुमको भल लागे तो हेल्पिंग बेगर्स विल ऑलवेज बी अटेंडेड बाय वन हु पोजेसेस दिस क्वालिटी सिंस लॉन्ग सिमिलरली आमर जदि तुम पेट रखिबार बिलीव थिबो पेट को भल पाउथिबो हैला तो आमे डॉग हो कैट हो वी विल कीप दिस एनिमल एज आवर पेट एट होम लविंग नेचर टेकिंग केयर ऑफ इट एक्सेट्रा एगुड़ा को आमर नेचुरली ऑकरिंग बिहेवियर कहीं ना वी being the human beings we are also gifted with certain kind of dispositions to carry हैला तो से डिस्पोजिशंस टा किछिटा हमर गिफ्टेड अछि किछिटा हम निजे निजस्व आनिछु तो सेही जिनिसटा जते बेले हम आख पाखरे घटे बीइंग द पर्सन्स आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द हैंड जने जदि हेल्पिंग बिहेवियर नेचर थिबो इवन इफ ही विल ट्राई नॉट टू डू बिकॉज
नॉट टू डू तो हेबो नाही किंतु पाख आखरे से प्रकार जिनिस घटुथिले नेचुरली थिंग इज दैट ता पाखरे से डिस्पोजिशन जेहेतु अच्छी ही विल नेचुरली ताकू कहीं कहया दरकार पड़बनी ही विल पुट हिज अटेंशन ऑन इट मन कर ट्राफिक हो जाइए ट्राफिक जमी जाइए गोटे रास्तार जन जदि हेल्पिंग बिहेवियर थी ना तो से ट्राफिक मैन से नहांती तो ही विल ट्राए से गाड़ी बाहर की ही विल ट्राए टू सेटल डाउन माने तमरो ट्राफिक टाकू सेट करिया को चेष्टा करिवो सो दैट कन्वेनियंस लोक मानकर कन्वेनियंस कन्वेनियंटली जाई परिबे तांकर किछि असुविधा हेबनी से प्रकार से करि परिबो सिमिलरली नेचर लवर्स कौन कर ना नेचर को केबे भी अफेक्ट करबनी मैला पकेबनी एणे तेणे डस्टबिन टे खोजब निज घर परिष्कार रखिब एट द सेम टाइम नेचर को भी बहुत केयरफुली ब्यूटीफुली सजाउथिब निज घरे गुड़ाए जिनिस गार्डनिंग हो कि गछ लगेबारे बिलीव करूथिब आखपाखरे बाहर भी से केबे भी डस्ट पकौ नथिब नेचर मेंटेन करूथिब ए प्रकार बहुत जिनिस अछि एनिमल लवर्स आर देयर आमर keeping pets at home, that is also one dispositions because loving of animals, love and affections खाली मनीष को तो दिया जाए नहीं, animals are also a part of it because they are more reliable and they are more affectionate. Okay, तो जो लोकर से जिनसटा थिबो ना तो से अफेक्शन टाको से केबे बंद करि पारिबो नाही मने कर मेंटेन करि पारुनी विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तथापि पेट प्रति लव एंड अफेक्शन थिबारे से जता कष्टटा केबे कराबनी घरे जदी चारटा रुटी होउची चारटा रुटी होउची दुई जण मनीषक पई दुईटा रुटी एक्स्ट्रा तयारी करा हबो काईकिना सकाळे से डॉगी मानकू आमे देई पारिबा इवन देखिबो तमे बे कोरोना टाइम रे भी तमे निश्चित निज आखपाख पड़िशा घर मानकर देखिथिबो कि लोक माने कि बहुत आम तो अफेक्टेड हेलु बट विशेष भाव में आम नेचर इज मच मोर अफेक्टेड स्पेसिफिकली एनिमल मानक पई भी खाइबा व्यवस्था मु निजे भी देखी निजे भी माने किछिटा मात्रा करछि बहुत करनी बिस्किट हो कि कौन हो एवरीडे आई यूज टू गिव टू द एट माय डोर स्टेप किछिटा लोक राइस मु देखी भात भात तैयारी करके आनिकी मंदिर सामने हो कहीं सब तो बंद हो गला ना होटेल रेस्टोरेंट मंदिर सब बंद हो गला ए माने खाइबे कौन समस्ते तो पेट घरे आमे रखी पारिबा नाही किछिटा बुला कुकुर अछंती एनिमल अछंती दे आर माने राति रे आमे शांति रे किंबा सोइला बेलू से माने गोटे क्राइंग तांकर गोटे माने दुखर कांदटा आरंभ होउथबा जोटा कि वेरी पेनफुल इफ समबडी इज द लवर ऑफ द पेट्स तो से जगार आमे समस्ते निज 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 चेष्टा करिछु से मानको खुआइया पाई दैट बिकम्स ए हैबिट विद इन सेल्फ केही काहाकू कही नाहांती कि तमे ए जिनिसटा कर इट इज ऑटो सेल्फ ऑटोमेटिक जेहेतु तुम हेल्पिंग बिहेवियर कि अन्य कष्टटा तुम देखिपार सेमती पर्सन थिबो तो नेचुरल थिंग इज दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट थिंग्स सराउंडिंग यू नेक्स्ट पॉइंट is about I have to write here another is a type of attention is divided attentions. Divided attention, this is another type. It is also known as limited attentions. And divided attention basically includes multitasking. It includes multitasking. Here people attend one stimuli and also respond to other multiple stimuli simultaneously. गोटे stimuli को attend करिबा at the same time multiple stimuli को भी एका संगरे attend करिबार capacity रखि थांती. In this type of attentions, one attends one stimuli
and also can attend multiple stimuli simultaneously. Got it? गोटे स्टिमुली को ऑब्जर्व करछि एट द सेम टाइम ता संगरे आउरी दुईटा तीनटा चारटा जिनिस भी से अटेंड करि पारुछि. जेमती कि तमर एग्जांपल्स कैन बी हियर तमे गाड़ी ड्राइव करूछ एट द सेम टाइम you can talk over the phone. A housewife can ए हाउसवाइफ हो कि एनी वर्किंग लेडी भी हो वर्किंग लेडी माने घर काम करती दैट इज द मिसकनसेप्शंस घर काम करती सेटा मिसकनसेप्शंस मन कर जड़े रुटी तैयारी करुच्ची घरे है एट द सेम टाइम शी माइट प्रिपेयर ए नोट माने मोबाइल धरिकी प्रिपेयर तार आउ पाठ भी प्रिपेरेशन करि पारिबो नोट तैयारी करि पारिबो रुटी साइमल्टेनियसली बोथ आर डिफरेंट टास्क्स बट बोथ द वर्क्स कैन बी डन बाय द वन पर्सन्स. So this is called as the divided attentions. And one more thing is that divided attention becomes possible only with practice effect. It becomes possible with the practice effect. It is very important. प्रैक्टिस नथिले एटा करि परिबो नाही. जणे जदि रुटीटा करूची एट द सेम टाइम पाठटा भी प्रिपेयर करि पारुची नॉट एवरीवन कैन डू इट. तापाई से प्रैक्टिस ऑलरेडी करि सारची किंबा हेई सारची प्रैक्टिस से एक्टिविटी ऊपर नंबर ऑफ प्रैक्टिस कला परे सेटा तारो हेबे पर्सनल डिस्पोजिशन सेही पार सारीची ताकू देखि कि जणे फर्स्ट टाइम के अटेंड करिया पे चेष्टा करिवनी आइदर रुटीटा जळी जिवो आ सेतन घरे समस्त भोकिला रहिबो नाही पाठ प्रिपेयर हेई पारिबो नाही रुटी भलो हबो. गट इट. तो से भलिया कथाटे किंबा जो मोबाइल रे जणे कथा होची एवं गाड़ी ड्राइव करूची do not think that it is the single trial he has done it multiple time रे से जिनसटा से करी करी की प्रैक्टिस हो जाइछि मोबाइल टा धरछि आ गोटे कामटा भी करूछि एबे तो तमे समस्त मल्टीटास्कर हो जाइछो इजंट इट. हमर ऑनलाइन क्लास चलछि लाइव क्लास चलछि तमे मते भी अटेंड करछो एट द सेम टाइम तमे ब्रेकफास्ट खाउथिबो किंबा तमे अन्य जिनिस भी करूथिबो. This is also one type of divided attentions. Rather, I can say this is the best example. And it is automatic and requires very less conscious mental effort. आमे जानिले जे divided attention होउची it is automatic. Automatically एटा हबो automatic and requires less conscious effort. हैला ऑटोमेटिकली एटा प्रैक्टिस हो गला पर ऑटोमेटिकली करिवो. मोर मने अछि छुआ बेले गोटे मोर बेस्ट फ्रेंड टे थिला से कोन करे ना टीवीटा चलीथिबो गीत सुनुथिबो एंड से रीड्स ताको कोनसी ता पाठ भी कंप्लीट हेबो एट द सेम टाइम गीतटा भी सुनी पारला ताको किछि अफेक्ट कला नै. आमु ता घरे गोटे दिन रहिया पई जाइथिली देन व्हेन आई गॉट बैक आई आल्सो थॉट दैट कि मु भी टिके ट्राई करे एमती तो पढंती लोक तार तो अटेंशन रे किछि डिस्ट्रैक्ट होउनी आई ट्राइड है आई ट्राइड मु गोटे दिन कौन कर गीतटा लगेदेली पाठ पढ़ाई बसली भाई पाठ पूरा गोल है पाठ किसी मन रही बट स्टिल गीतटा मु कंप्लीट कर पारली गीतटा भल भाव में शुणिली पटे गाड़ी खाइली माठू कि पाठटा मोर कंप्लीट है ना व्हेन आई वाज वेरी चाइल्ड माने 5 वर्ष 5th स्टैंडर्ड रे आई थिंक ए जिनसटा घटी थिला तो कहवा माने होची कि अन्य को देखिकी से जिनसटा जे मोर हब कहि कि नाही बिकॉज़ कोन सी एक्टिविटी हमें जो मल्टीटास्कर्स लोकों को हमें देखुछु दे हैव engage themselves in activities and quite number of practice they have done it for which they are able to do now as a multitasking हैला. तो से जगह practice ता बहुत important factor practice करू करू ही से जिनिसटा ता पाखरे आसीची with a single glance ए जिनिसटा केबे भी developed हुए नाही. Another type of attention is that this is about the divided attentions and another type is alternating attentions.
This is another type of attentions. It involves shifting attention between two or more things with different cognitive demands. It involves shifting attentions here individuals stop attending to one thing and then switching to the next task. एटी कौन हो गोटे पर्टिकुलर टास्क रे तुम ऑलरेडी अटेंड करुछ बट ऑल ऑफ ए सडन तुमको से पर्टिकुलर टास्क अटेंशन टा हटे कि तुमको आउ गोटे पर्टिकुलर टास्क रे अटेंशन टा देबा को पड़ुची सेटा को आ जाउची अल्टरनेटिंग अटेंशंस जेंटी कि तमरो रीडिंग ऑफ बुक्स गोटे बहीटा पढ़ुछ अरे केते पढ़ुलुनी मन कर घरे कहले कि बहुत पढ़िलुनी आज घरे लोकवाक आसन ना तू टिके हेल्प कर मते देन यू जस्ट स्टॉप द अटेंशन ऑफ रीडिंग द बुक एंड यू आल्सो गो टू हेल्प द हेल्पिंग योर मदर इन कुकिंग माने तमे एठी कोन हला ना एग्जांपल कैन बी तमे रीडिंग करूछ हला पढ़ुछ देन यू स्टॉप दिस क्वालिटी विद इन यू रीडिंग तमे स्टॉप कर देलो देन तमर शिफ्टिंग केमती हला तमर संगे संगे शिफ्टिंग हला मना कलारू तमर कुकिंग तमे रोसई करिया को दौड़लो गोटे पर्टिकुलर अटेंटिव बिहेवियर टाकू तमे से जगह रे ड्रॉप करिकी तमे तमे अटेंशन विल बी शिफ्टेड टू another work of your or another task that is the cooking. Last one of types of attention is that is called as the focused attention. Focused attention kono? This type of attention involves attending sudden external stimuli. Hela involves attending sudden external stimuli. आमे चुपचाप घरे बसचु किंबा कोनोसी वर्क सेटिंग रे रहिचु ऑल ऑफ ए सडन गोटे लाउडर नॉइज आसिला किंबा फ्लैश ऑफ फ्लाइट आसिला से जगह रे हमर अटेंशन इमीडिएटली वी जस्ट गिविंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली काईकि ना आमे से प्रति फोकस जहाँ किछि भी अटेंशन देई कि हम पढौचु किंबा कार्य करचु किंबा एई जगह रे हमें हम अटेंशन टा ड्रैग हेइते से पर एग्जांपल कैन बी लाउड नॉइज किंबा तमरो अ फ्लैश ऑफ It is particularly important in situations where something in the environment requires immediate attention and quick actions. ए जिनिस फोकस्ड अटेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड कहीं आम तो खाली आम भितर इनवॉल्व ना होना आमको एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट करुच्ची आम घर पाखरे घर आगरे घटनाटे गोटे एक्सीडेंट हो गला कि जोर रे नॉइज आरंभ है तो आम घर टिके बाहर की देखुचु कि कौन घटुची तो इमीडिएट अटेंशन एंड क्विक एक्शन पाई अटेंशन काम ए अटेंशन काम करे.
So, this type of attention seeks immediate attention and action. So, this is about the types of attentions. On Monday again I will come with another topic. Thank you. Thank you.